Anterior pituitary gland or adenohypophysis. It is called as a master gland. Why anterior pituitary gland is called as master gland? Because it regulates many other endocrine glands. That's why it is called as a master gland. Anterior pituitary gland consists of three parts: pars distalis, pars tubralis, pars intermedia. So you can see in the diagram that anterior pituitary gland consists of three parts: pars tubralis, pars distalis, and pars media. Histologically, anterior pituitary has two types of cell which have different staining properties, and depending upon that, it may be a chromophobe cell and chromophile cell. Chromophobe cell contain large number of granules and are darkly stained. According to staining property, the cells which are present in the anterior pituitary gland may be acidophilic cell or basophilic cells. According to secretory nature, anterior pituitary gland may secrete somatotropes, which secrete growth hormones, corticotropes, which secrete adrenocorticotropic hormone, thyrotropes, which secrete TSH, that is thyroid stimulating hormone, gonadotropes secrete follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, and lactotropes secrete prolactin. So depending upon the secretory nature, anterior pituitary gland cells may be somatotropes, corticotropes, thyrotropes, gonadotropes, and lactotropes. Somatotropes secretes growth hormone, corticotropes secrete ACTH, thyrotropes secrete TSH, gonadotropes secrete FSH, LH, and lactotropes secrete prolactin. Somatotropes and lactotropes are acidophilic cells and other cells are basophilic cells. So somatotropes and lactotropes are acidophilic cells and other cells are basophilic cells. Now these are the hormones which you can see on the screen. Hormones secreted by anterior pituitary are growth hormone, adrenocorticotropic hormone, thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, and prolactin. These are the different hormones secreted by anterior pituitary gland. Hormones which stimulate endocrine gland to secrete the hormones called the tropic hormone. See, जो hormones endocrine gland को stimulate करते हैं hormone secrete करने के लिए, those hormone we call as a tropic hormone. One of the example of tropic hormone is growth hormone. तो basically जो hormone endocrine gland को stimulate करते हैं hormone secrete करने के लिए, उस hormone को हम tropic hormone बोलते हैं, and growth hormone is one of the example of tropic hormone because it also stimulates liver to cause secretion of liver hormones. Gonadotropic hormones are LH and FSH because they act on gonad. That's why they are called as a gonadotropic hormone. Now we'll study about growth hormone. One by one we will study about the hormone. Till this, I hope you have understood. Anterior pituitary gland secrete different hormones. Anterior pituitary gland having acidophilic cell and basophilic cells. Depending upon the secretory nature, they may be the somatotropes, gonadotropes, lactotropes. These are the different secretory nature of anterior pituitary gland, and according to that, hormones secrete. Anterior pituitary gland secrete the hormones. Now we'll study about the somatotropic hormone, that is growth hormone. It is secreted by somatotropes, which are acidophilic cells of anterior pituitary gland. Growth hormone is protein in nature. It is having a single polypeptide chain with 191 amino acid and molecular weight 21,500. Growth hormone is transported in blood by growth hormone binding proteins.
So what I was telling you, growth hormone is secreted by somatotropes, which are the acidophilic cells of anterior pituitary. It is very essential or important to know कि growth hormone क्या काम करता है. Why this growth hormone is essential? See, basically आपको पता चाहिए कि anterior pituitary gland जो होती है, वो gland growth hormone secrete करती है. और ये growth hormone जो होता है, it is responsible for general growth of body. Body के general growth के लिए growth hormone essential होता है. For growth of almost all the tissues of body which are capable of growing, for that growth hormone is essential. It increases size and number of cells by mitotic division. Growth hormone act on metabolism of all three major types of foodstuff. First is on protein metabolism. Growth hormone accelerate the synthesis of protein. बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ओवरऑल ग्रोथ ऑफ बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. बिसाइड दैट हम जो भी खाना खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, उसके मेटाबॉलिज्म में ग्रोथ हार्मोन जरूरी होता है. एंड फर्स्ट वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. Growth hormone accelerate the synthesis of protein. How it increases or accelerate the synthesis of protein? That is by increasing amino acid transport through cell membrane. Number one. Second, increasing ribonucleic acid translation in cell. RNA को translate करता है सेल के अंदर. Thereby, ribosomes are activated and more protein gets synthesized. So growth hormone क्या करता है? अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है सेल मेम्ब्रेन तक. आरएनए को ट्रांसलेशन प्रोसेस से सेल के अंदर तक लेकर जाता है और वहां जाकर सेल के अंदर एक बार आरएनए पहुंच गया, उनका परसेंटेज बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो राइबोसोम्स की एक्टिविटी बढ़ती है और राइबोसोम्स की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है. दिस इज हाउ ग्रोथ हार्मोन एक्टिंग ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. Not only that, it increases transcription of DNA to RNA, and this RNA will in turn stimulate ribosomes to cause more synthesis of protein. So basically, अमाइनो एसिड को सेल तक पहुंचाना, आरएनए का परसेंटेज सेल के अंदर बढ़ाना, और when RNA get increase, जब RNA बढ़ जाता है तो राइबोसोम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और राइबोसोम्स की एक्टिविटी जब बढ़ती है बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिविटी बढ़ जाती है. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से डीएनए से आरएनए इंक्रीज होता है, which in turn accelerate the synthesis of protein in the cell. Growth hormone also decreasing catabolism of protein. Growth hormone inhibits the breakdown of cellular proteins. It helps in the building up of tissues. Growth hormone promoting anabolism of protein indirectly by increasing release of insulin from pancreas, which has an anabolic effect on proteins. That was all about action on protein metabolism of growth hormone. Now we have to study about the action of growth hormone on fat metabolism. On fat metabolism, growth hormone mobilizes fat from adipose tissue, so the concentration of fatty acid increases in the body fluid, and these fatty acids are used for the production of energy by the cell. तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? एडिपोज टिश्यूज के अंदर जहां फैट है उसको मोबिलाइज करने का काम करता है ताकि बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स बढ़ जाए, और ये फैटी एसिड्स जो है, फैट्स का ब्रेकडाउन होकर फैटी एसिड्स तैयार होते हैं. ये फैटी एसिड्स जो है सेल्स के लिए जो एनर्जी जरूरी है, उस एनर्जी के लिए फैटी एसिड्स यूटिलाइज किए जाते हैं. ड्यूरिंग यूटिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बहुत सारा एसिटिक एसिड तैयार होता है बाय द लीवर and that get released into the body fluid, और इस तरह से एसिटिक एसिड बढ़ने के बाद में that will lead to ketosis. That was on fat metabolism. Now on carbohydrate metabolism.
Growth hormone reduces peripheral utilization of glucose for energy production. Growth hormone basically क्या करते हैं कि peripheral utilization of glucose को कम कर देते हैं. Formation of acetyl coenzyme during metabolism of fat influenced by growth hormone. So this is how growth hormone is essential for overall growth of the body. It is essential for protein metabolism, for fat metabolism, and for carbohydrate metabolism. In simple summary, what I can tell you, body के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन जरूरी है. जहां सेल के अंदर के अमीनो एसिड्स इंक्रीज किए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, डीएनए का आरएनए में कन्वर्जन होके ट्रांसलेशन प्रोसेस से दैट विल स्टिमुलेट राइबोसोम्स, और राइबोसोम जो प्रोटीन तैयार करता है, और ट्रांसलेशन प्रोसेस से आरएनए राइबोसोम्स को स्टिमुलेट करके प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाते हैं. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की जहां तक बात है तो पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को ग्रोथ हार्मोन कम करते हैं ताकि वो ग्लूकोज बॉडी के अंदर अवेलेबल रहे जब कभी हमको एनर्जी की जरूरत है तब. एज वेल एज ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, जहां कहीं बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू में फैट डिपॉजिट है, उस फैट को मोबिलाइज करने का काम जो है वो ग्रोथ हार्मोन करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पे फैट का कन्वर्जन फैटी एसिड्स में हो और ये फैटी एसिड सेल के एनर्जी के लिए यूटिलाइज हो जाए. दिस इज हाउ ग्रोथ हार्मोन इज एसेंशियल फॉर दीज फंक्शंस. ऑन बोन्स, growth hormone is responsible for differentiation and development of bone cells. It also increases growth of skeleton. It also increases both length as well as thickness of bone. So basically bone के development के लिए हमको growth hormone जरूरी होता है. It increases synthesis and deposition of proteins by the chondrocytes and osteogenic cells. Multiplication of these cells by enhancing the intestinal calcium absorption and formation of new bones converting chondrocytes into osteogenic cells. Growth hormone increases the length of bone until epiphysis fuse with the shaft which occur at the time of puberty. तो प्यूबर्टी तक ग्रोथ हार्मोन जो है बोन्स की लेंथ को बढ़ा सकते हैं क्योंकि तब तक एपिफाइसिस बोन के शाफ्ट के साथ में फ्यूज नहीं होता है. Once the epiphysis get fuses with the shaft, that is after the puberty, growth hormone is now what do you say, unable to act on the bones. So after the epiphyseal fusion, length of the bones cannot be increased. इसीलिए एक बार puberty आ जाने के बाद में bones जो है length of bones जो है वो नहीं बढ़ती है, bones की length नहीं बढ़ती है after the puberty. तो प्यूबर्टी तक अच्छे से आपकी हाइट बढ़ सकती है क्योंकि तब तक एपिफाइसिस शाफ्ट के साथ में फ्यूज नहीं होता है. एक बार एपिफाइसिस ऑफ बोन शाफ्ट के साथ में फ्यूज हो गया तो बोन की लेंथ नहीं बढ़ती है बिकॉज ग्रोथ हार्मोन काम करना तब बंद कर देता है. दैट्स व्हाई हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर द फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस with the shaft of bone causes enormous growth of the skeleton, and that condition is called as the gigantism. So you can see the picture of gigantism. A normal person and second figure is of gigantism. Hypersecretion of growth hormone after fusion of epiphysis with the shaft of the bones lead to acromegaly. And hypersecretion of growth hormone before the fusion of epiphysis. Epiphysis का शाफ्ट के बोन के शाफ्ट के साथ में फ्यूजन होने से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ रहा है तो जाइगेंटिज्म होता है. और अगर epiphysis का बोन्स के शाफ्ट के साथ में फ्यूजन होने के बाद में भी अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ रहा है तो there is a condition called as acromegaly. So I hope you understood gigantism and acromegaly. Basically both the conditions are because of the hypersecretion of growth hormone. लेकिन एक condition जो है gigantism वो
फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस विद द शाफ्ट ऑफ बोन्स के पहले होती है, जिसको हम जाइगेंटिज्म बोलते हैं, एंड एक्रोमेगाली इज व्हाट इज द after the fusion of epiphysis with the shaft of the bone, there is a hypersecretion. That is what we call as the acromegaly. So you can see the diagram of acromegaly. Now this growth hormone is not keep on secreting. It must have some check mechanism. That is what we call as a feedback mechanism. So growth hormone is under the secretion of negative feedback control. Where hypothalamus जो है वो growth hormone को कंट्रोल करता है. How it is controlling? Hypothalamus release GHRH and GHRP, which in turn inhibits the release of growth hormone from pituitary. So hypothalamus जो है वो GHRH and GHRP release करता है, which in turn inhibits the release of growth hormone from pituitary. So this is how growth hormone is essential and important. Remaining all other hormones we will see in the next lecture. Thank you very much.